देयर इज अ पावर इन प्रेयर्स। और हम लोगों ने हमेशा सुना है कि प्रार्थना से बहुत कुछ चीज़ें बदल जाती है। एंड अभी अभी तो मैंने एक यूट्यूब पे ऐड देखी और उस इंसान ने बताया कि द पर्सन इज अ प्रेयर कोच, यानी कि वो सिखाता है कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए कि भगवान जल्दी सुनता है। आप सभी की प्रार्थना भगवान ने सुन ली और इसीलिए हम सब आज यहाँ पर साथ हैं और आपकी वजह से ये प्रोग्राम खास है, क्योंकि आपकी प्रार्थना सुनी, हमारी प्रार्थना सुनी, तो वापस एक बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर्स करते हैं और उस शक्ति को याद करते हैं जिस शक्ति ने हमें बहुत ज़्यादा पावर दिया है, बहुत ज़्यादा ताकत दी है। एंड हम इस दुनिया में और आगे बढ़ रहे हैं, आपके सपने पूरे हो रहे हैं, परिवार के सपने पूरे हो रहे हैं। तो लेट्स वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ CMA इंस्टीट्यूट ऑफ सूरत चैप्टर फॉर द प्रेयर्स। थैंक यू। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। Thank you so much. Now, I would like to request the dignitaries to come forward for the lighting of the lamp. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Now, I would like to request CMA Kishore Waghela, Chairman of Surat chapter of the South Gujarat chapter of CMA Institute, for his welcome speech. Good morning. Namaste. Suprabhatam. A very warm welcome to all of you. On behalf of Surat South Gujarat chapter of Institute of Cost Accountants of India, it gives me immense pleasure to extend heartfelt gratitude to the esteemed dignitaries, respected guests, managing committee members, proud parents, admin staff and volunteer team
and our dear students on this auspicious occasion of prize distribution and felicitation function. We are deeply honored today by the gracious presence of our today's chief guest, CMA Neeraj Dhananjay Joshi, Vice President of our institute. Our guest of honor, Sri Kishore Sri Javda, Honorable Vice Chancellor of Veer Narmad South Gujarat University. Our past President, CMA Ashwin Dalwadi Sir, WRC Chairman, CMA Mihir Vyas Sir, former Vice Chairman, WRC, CMA Chaitanya Mohirar Sir, WRC Vice Chairman, CMA Nanti Shah Sir, Galaxy of our past Chairman, CMA Manubhai Desai, CMA Brijesh Mali, CMA Bharat Savani, CMA Kailas Chandra Gupta, my Vice Chairman, CMA Keval Shah, Honorable Secretary, CMA Vipin Patel, Treasurer, CMA Ashwin Ambalia, Managing Committee Member, CMA Mahesh Bhalala and CMA Deepali Lakdawala. And I also welcome CMA Ravi Chowcharia Sir and many senior members. Your presence has truly valued to this memorable function. Now, this ceremony is a celebration of hard work, discipline and excellence. We are here to felicitate our foundation, intermediate and final students who have successfully cleared their examination and to recognize the outstanding achievement of all India rank holder at the intermediate and final level students. Their accomplishments are not only a matter of personal pride, but also a source of inspiration for all aspiring CMAs. At the same time, we acknowledge with the gratitude the invaluable role played by the parents, teachers, mentors, and well-wishers who have guided and supported our students in their journey. Their contribution is equally significant in shaping the success story we celebrate today. The Surat South Gujarat chapter has always believed in nurturing young talent and promoting professional excellence in alignment with the vision and mission of ICMAI. As we celebrate the achievement of our students, we also reaffirm our commitment to contribute toward building competent professionals who will add value to business, industry, and the nation at the large. On this joyous occasion, let us applaud the achievement of our students and encourage them to continue striving for higher goals with integrity and dedication. Today, it gives me immense pleasure to give certain milestone of Surat chapter. The Institute of Cost Accountants of India, Surat South Gujarat chapter was formed on 23rd March 1992 and inaugurated by the hand of President of Institute of CMA P.D. Phadke and Sri Sharat Kapadia, then the President of Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry. The chapter has received 12-time Best Chapter Award. The chapter has grown by leap and boundary, serving the members, student and society at large over the past 33 years. The chapter has 300 members and around 5,000 students. The chapter has given 100 plus ranker in last 5 years. This is the historical moment for Surat chapter. Surat has recently given All India 1 in inter and final examination, which was again proud moment for Surat chapter. Surat chapter conducted the pre-placement training program since last 3 years. Surat chapter has highest admission in this term, 500 plus in foundation and 130 plus in intermediate stage. In the 12th National Student Convention 2025, ICMAI student of Surat chapter, namely Nikita Bansal and Krutika Singhal, got certificate from the Honorable President of India, Srimati Drupadi Murmu, on 23rd June 2025 at Vignan Bhavan at New Delhi. This was again a pride moment for Surat chapter. Once again, I extend a warm welcome to all our distinguished dignitaries, members, parents, and students. Let us together make this function a grand success and memorable day in the journey of our chapter. Thank you. Jai Hind, Jai CMA. Thank you so much, CMA Kishore Waghela ji.
Now I would like to request our former chairman, CMA KC Gupta ji, to share about the mission of the chapter. Okay, KC Gupta is not available right now. Now I would like to request. Oh, sorry. Good morning, dignity on dais, dignitaries on off dais, parents, students, and pass out members. Good morning, and I welcome you all. Surat South Chapter of Cost Accountants operates under the Institute of Cost Accountants of India, a premier professional body in India responsible for regulating the profession of cost and management accountancy. While each chapter follows the broader mission of ICAI, ICMA, regional chapters like Surat South Gujarat chapter also focus on local development, student support, and professional excellence. Mission of the Surat South Gujarat chapter of Cost Accountants to develop and promote the profession of cost and management accountancy in Surat South Gujarat, to support and guide students and professionals in their journey of becoming cost and management accountants, to organize seminars, workshops, and training programs to upgrade professional knowledge and skills, to promote ethical standards and best practices in cost and financial management, to contribute to industrial and economic growth by providing cost-effective management solutions. If you are looking for the exact mission statement or latest activities of Surat South Gujarat chapter, I can look it for you, just let me know. Thank you all. Thank you so much, CMA KC Gupta ji. Now I would like to request CMA Bharat Savani to come forward to share the goals of the chapter. CMA Bharat Savani is not available. Okay. Now I would like to request CMA Brijesh Mali, former chairman of the chapter, to come forward to share the vision of the chapter. कितने लोग जानते हो ब्रिजेश माली को? कितने लोग जानते हैं ब्रिजेश भाई को? हाथ तो ऊपर करो. अच्छा, तो तालियां बजाओ. Thank you. On this auspicious occasion of prize distribution function, I'd like to share that सूरत साउथ गुजरात चैप्टर अभी जो एक रिच स्क्वायर पे अपना चालू है, हमारा गोल है कि हमारा खुद का CMA भवन बने. इसके लिए हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर जो आज सूरत आए हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इंस्टीट्यूट हमें इस बारे में सपोर्ट करे. और जो हमारे WRC के चेयरमैन सर हैं मीर व्यास सर, उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो सूरत चैप्टर का एक विज़न है कि सूरत में CMA भवन बने, इसके लिए WRC एज वेल एज सेंट्रल बॉडी वो हमें सपोर्ट करे. तो आज आप जो अभी बैठे हैं, तो हम अपने नए भवन में ही ये प्रोग्राम करें, ऐसी हमारी कमेटी का विज़न है. थैंक यू ऑल. थैंक यू वेरी मच ब्रिजेश माली जी. हम सब ने सुना है कि वर्ल्ड क्रिएट्स योर वर्ल्ड, और आपके शब्दों में वो पावर है कि आने समय में, आने टाइम के अंदर 100% CMA भवन के अंदर ही ऐसा फंक्शन और ऐसा सेलिब्रेशन हो. सो थैंक यू वेरी मच. आप सब लोग भी यही चाहते हो ना? 10 ग्राम हाई. आप सभी लोग भी ये चाहते हो? थैंक यू सो मच. ओके, वो सुनता है हमेशा, इसलिए. यस, सो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट CMA अश्विन अंबलिया एवरग्रीन to share the students' activity of the chapter. Good morning to our guests as well as our students. एक quotes याद आता है मुझे, मैंने खुद ने बनाया हुआ है. जब मैं पढ़ाई करता था, काफ़ी टाइम मेरी अटेम्प्ट भी लगी है, तो सोचता था कैसे मैं मोटिवेट हूँ.
तो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, तो प्लीज मेरे लिए भी तालियां बजाइए। आशा और निराशा में बस फर्क इतना ही होता है। आशा और निराशा में बस फर्क इतना ही होता है। आशा हमें मंजिल तक ले जाती है और निराशा खोई हुई मंजिल का रास्ता दिखाती है। हमारा सूरत साउथ गुजरात चैप्टर ऑफ द कोस्ट अकाउंटेंट स्टूडेंट के लिए क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, कौन से वर्कशॉप दे रहे हैं। पहले तो देखा जाए तो स्टूडेंट्स वर्कशॉप में जीएसटी एंड टैक्सेशन का वर्कशॉप होता है, कोस्ट ऑडिट एंड कंप्लायंस सेमिनार, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग विद टैली, फाइनेंस एक्सेल फॉर प्रोफेशनल एंड इंडस्ट्रियल ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग, करियर गाइडेंस प्रोग्राम, career counseling and awareness drives, pre-placement orientation program and corporate communication and soft skill training। ये सब हम प्रोवाइड करते हैं। हमारा विजन है कि सभी स्टूडेंट प्रैक्टिस के साथ बिजनेसमैन कैसे बने और देश के लिए और इकोनॉमिक के लिए कैसे आगे बढ़ाए। बस इतना ही शेयर करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। Thank you very much, CMA Aswin Ambalya ji. Now, I would like to introduce a person who is the fellow member of the Institute of the Cost Accountants of India. He is a research scholar with Symbiosis International University, Bachelor of Commerce from the University of Pune, secured second rank in MBA examination conducted by the University of Pune, specializing in finance discipline. He is a certified solution consultant for MySAP, managerial and financial accounting. Felicitation, sir. He is a certified solution consultant for MySAP, managerial and financial accounting, FICO, from SAP, Germany. He has qualified himself as a certified information system auditor. He is a Microsoft certified professional in Microsoft SQL, Server 2000 Enterprise Edition, and has completed diploma course from NIIT and also certified independent director from IICA. Friends, he has started his journey. He has started his journey in the domain of cost and management accountancy as an associate consultant of DV Joshi and Associate, and after gaining of the experience of 3 years, he forayed into domain of IT and ITES, started his career in IT as a functional consultant with Anand ERP, and he's worked as a customization of the ERP and development of user manuals using engagement. He has experience over 8 years in the area of ERP implementation and support, as well as he has worked with CMC Limited, a TCS group company, and in the end, he has done end-to-end implementation of the SAP after CMC Limited. Friends, there is a long things to share with you, but to make it short, I can say you the person who is an inspiration from all of us, who is an inspiration for all the committee members, who is an inspiration for all the CMA students. I would like to invite CMA Kishore Waghela to felicitate the person
who is the Vice Chairman of the Institute, Vice President of the Institute, CMA Neeraj Joshi. Now, it is an honor and pleasure to introduce a person who has worked remarkable in the field of education, and he has brought 100 CR grant from the Ministry of Education, New Delhi, achieved first position across India in the creation of all credit data with students AP, AR and ABC with 6,05,418 students, appointed more than 84 times as VC nominee by the VNSGU, engaged in more than 13 social communities and other organizations, affiliation with more than 13 social organizations, appointed as a task force committee member in Vibrant Gujarat Summit 2013, rendered services as a peer team member in the NAC team, rendered services as a peer team member in the state level of AAA team, organized workshop, FDPs, national, international conferences, events and training programs. Resource person, chief guest as a numerous institutions selected as a district coordinator of Swarnim Gujarat by the Commissioner of Higher Education, Gujarat. And 34 years of excellent experience in academic and educational administration. Please, friends, put your hands together to invite our guest of honor, Vice Chairman or VC of VNSGU, Sri Kisorji Chawda. Please welcome, sir. I would like to request CMA Neeraj Joshi to felicitate by Vice Chancellor, sorry. Yeah.
Friends, now I would like to introduce a person who speaks straight, simple, short, and very easy. And he just said with me to make it very short. Former president of the institute, practicing cost accountant, person with simplified nature and very straightforward. So please invite, my dear friends, our former president, all the way from Ahmedabad, CMA Ashwin Dalwadi ji, and I would like to request CMA Ashwin Ambalya to come forward for the felicitation and token of love. It's Ashwin Square, yes, it's a good opportunity. Now I would like to introduce a person who is someone who has mastered both leadership and learning, from working with giants like Tata Motors, Infosys, and L&T Infotech, to implementing SAP system across continents. He has seen the corporate world from every angle, with 15 years of expertise in costing, finance, MIS, and ERP. He has gained industry-trained professional and traveled across the USA, Europe, and the Middle East for his assignment. But what's most inspiring, those who have completed CMA, please listen. But what's most inspiring, beyond the corporate success, he has dedicated years of serving the profession, whether as a chairman of the WRC, treasurer, or now secretary of the WRC for 25-26. Friends, let's welcome true leader who balances corporate brilliance with professional service, CMA Chaitanya Moharir sir. I would like to request CMA Vipin Patel to come forward for felicitation.
Now, friends, I would like to introduce a dynamic leader in the field of cost and management accountancy. He is newly elected the chairman of WRC of the Institute of the Cost Accountants of India and has also served as vice chairman, secretary, and held several key positions, empowering CMAs. With over 13 years of rich experience in cost audit, compliance, and management system across sectors like pharmaceutical and engineering, he has worked with PSUs, Fortune 500 companies, and MNCs. Currently partner at Divanji and Company, he is not only a professional but excellent and also a mentor and guide for many in the profession. Friends, please join me in welcoming CMA Mihir Vyas with a huge round of applause. And he is directly from Vadodara, so I would like to felicitate, मैं खुद ही करना चाहता हूँ उनको. Now, our next guest is known as turning members into narrative and systems into solutions. A national rank holder in CMA Intermediate, he has begun his career at Bartley Boy Limited, where he has implemented costing systems across the entire plant, providing his brilliance right from the start. Since 2011, he has been a practicing cost accountant catering to PSUs, listed companies, and multiple sectors as a trusted consultant and auditor. He was also among the first 2 people from Gujarat recognized as an XBRL conversion service provider by the Ministry of Corporate Affairs when XBRL was introduced. Beyond practice, he has served the profession in many leadership roles. Chairman of the Surat, South Gujarat chapter of ICMAI, Vice Chairman, Secretary, Treasurer, and deeply involved with GST awareness program, academic boards, and professional associations. A true contributor to both industry and education, and currently holding the position as a Vice Chairman of WIRC. My dear friends, please put your hands together to welcome our own CMA Nanti Saji. I would like to tell CMA Kishore Waghela, please come forward for the felicitation.
यहाँ पर कितने लोग VNSGO में स्टडी करते हैं? हाँ, तो आज मौका है उन्हें सुनने का जो वाइस चांसलर है. I would like to invite the Vice Chancellor of the VNSGU for his words. Sir, please come forward. ओम अरहम. आज हम भारत राष्ट्र की सूर्य नगरी यानी सूर्यपुत्री तापी मैया के किनारे, और ये जिस भूमि पर आप बैठे हैं वो परशुराम की धरती. इसीलिए मैं याद करवाता हूँ कि यहाँ से पूरे भारत राष्ट्र में ये एक ही ऐसा शहर है. ज़्यादातर क्योंकि मैं यहाँ से ही बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मैंने 1983 में फर्स्ट ईयर में बीकॉम में एडमिशन लिया था. आज आफ्टर 42 इयर्स मैं यहाँ जानता हूँ कि यहाँ जब मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तब यहाँ पृथ्वी पे कितने लोग थे, तो ये पूरे हॉल में गिने तो लेस देन 90%, यानी 10% से ज़्यादा लोग ही जब मैं फर्स्ट ईयर में गया तब यहाँ था सिस्टम के अंदर, यानी पृथ्वी पे. मगर ये शहर ने, ये ऐसा शहर है, आपके माताश्री पिताश्री और कई सारे लोग भारत राष्ट्र के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी कल्चर है, सभी डिस्ट्रिक्ट और सभी कल्चर का कम से कम एक आदमी ये शहर में होगा. और सभी को कोई जोड़ता है तो फाइनेंस, और फाइनेंस को कोई जोड़ता है तो ये CA में जोड़ता है, अपनी पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग जहाँ पे अपनी एसोसिएशन है वो पूरी हम सबको जोड़ती है. तो ये आज के ये पूरे कार्यक्रम में अपने पास हम सबको मार्गदर्शन आए हुए सभी हमारी टीम, यानी आदरणीय CA में नीरज धनंजय जोशी जी, आदरणीय अश्विन दलवाड़ी जी, आदरणीय CA में मिहिर व्यास जी, आदरणीय चिंतन्य मोहिर जी एंड आदरणीय CA में नैंटी शाह जी और हम सब परिवार. सबसे पहले तो मैं सर से भी यही बात कर रहा था, जोशी जी से. इसमें से यहाँ बैठे हुए मोर देन 80% स्टूडेंट्स आर एनरोल, या तो पास हो गए हैं बीज साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी से. 60 साल में हर साल 50,000 से ज़्यादा ग्रेजुएट होते हैं. भारत राष्ट्र में 1200 यूनिवर्सिटी है, इसमें से अपनी जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी है जिसका 60 साल हुए, और हर साल मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स आर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट. और हर साल में रेगुलर स्टूडेंट्स जो है मोर देन 2 lakhs, nowadays more than 2.25 lakhs, और पर ईयर वी आर कंडक्टिंग मोर देन 6 lakh स्टूडेंट्स एग्जाम. मगर सबसे किसी को डर लगता है कि नहीं लगता, मगर मुझे बहुत डर लगता है. मैं सर से बता रहा था क्योंकि 1983 में जब मैंने एडमिशन लिया तब मेरी आंखों में जो चमक थी, और मेरी चमक को देख के यहाँ के जो भी लोग हैं मुझे पढ़ाए, मुझे कहीं न कहीं तरह से संवारा, और मुझे पहले 3 साल का ये कुल गुरु के पद से सेवा करने की अवसर दिया, और दोबारा मुझे और 5 साल यानी ये यूनिवर्सिटी का 8 साल तक मैं कुलगुरु रहने का मुझे अवसर मिला. मगर मैं आदरणीय जोशी सर जी में यही बात कर रहा था कि जब आपकी आंखों में मेरी 1983 की चमक, ग्रेजुएशन के 1986 की चमक, 91 में
89 में फैकल्टी की तरह जुड़ने की चमक मेरी आंख में, ऐसी ही चमक जब आपकी आंखों में देखता हूं तब मुझे डर लगता है, क्योंकि मुझे 40 साल में ये शहर ने बहुत कुछ दिया, जो इंटरनेट सब कहीं ना कहीं वेबसाइट और आपको पलता ही चलता ही रहता है, नहीं है तो हमें मीडिया बता देता है हर रोज कि ऐसे लोग पृथ्वी पे जिंदा है, हम जैसे लोग अलग अलग तरीके से। मगर आपकी आंखों में जो चमक देखता हूं तो मुझे डर ये लगता है कि आपकी आंखों में जो चमक है वो मेरे तरह 40 साल के बाद मेरे जैसे मुकाम पे आप पहुंचे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मेरे लिए ये शहर ने बहुत कुछ किया, मेरी बहुत सारी आदतें थी स्ट्रिक्टनेस की अलग अलग, ये मेरी अपनी पुरानी पहचान है डिसिप्लिन की। मगर आपको ही मैं यही चाहता हूं कि 40 साल के बाद, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकसित भारत @2047, शायद मैं तो तब पृथ्वी पे नहीं होगा 2047 में, मगर आप सब होंगे। तो आप सब होंगे तो सबसे ज़्यादा मैं आभार मानता हूं आप लोगों के माताश्री और पिताश्री के। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां हैं वहां से खड़े होकर अपने एक बार जो लोग विजेता हुए हैं उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। सीएमए में अभी जो जितनी सिलेक्ट, आप हम खड़े होंगे और जो अपने मेडलिस्ट है अपने अपनी जगह को छोड़िए और खड़े हुई पहले तो एक बार मैं आपको एक्सरसाइज करवा लेता हूँ इसी बहाने। पीछे वालों को इसी बहाने मोबाइल छोड़ना है, मोबाइल छोड़ने की अलग टेक्निक है। अपने पहले सबसे पहले जो हमारे जो भी स्टूडेंट्स रैंकर आए, रिंकर यानी भारत राष्ट्र में अपना नाम रोशन किया, उनके लिए एक बार खड़े होकर जोरदार ताली बजाइए। सभी को आप नहीं दे पाएंगे, मगर आप उनके लिए जितना ताली बजाओगे वो ताली में आपकी आवाज सुननी चाहिए कि एक दिन मेरे लिए भी इतनी ताली बजे यार। पीछे वाले को कम लगता है मगर बजाना जरूर है यार। दूसरी एक बात ताली बजाइए माता पिता के लिए, अपने माता और पिता के लिए कि जिसने आप तक यहाँ पृथ्वी पर आने का मौका दिया। अगर वो नहीं आपको मौका देता तो आज यहाँ ताली बजाने के लिए आप यहाँ पृथ्वी पर नहीं होते। और तीसरी ताली लगाइए अपने एसोसिएशन के लिए, एक बार जोर ताली बजाइए कि ताली अगर जैसे कहा ना कि ऐसा हॉल बनाना है तो सबको एक साथ ताली बजाना पड़ेगा, एक साथ सबको जोड़ना पड़ेगा, एक साथ हमें भारत राष्ट्र के विरुद्ध करना पड़ेगा। इनके लिए भी अपनी पूरी एसोसिएशन की टीम, हो सकता है कि कल आप भी यहाँ आके आप ऐसी मेरी तरह किसी का नेतृत्व कर रहे हैं कि आपके लिए अभी से ताली बजाए कि मैं भी एक दिन रहूँगा। और आखिरी एक बार भारत राष्ट्र के लिए बजा दीजिए कि जिसके लिए आप यहाँ हैं और ट्रम्प के बाकी के पॉलिसी के लिए अगर करना है, हम सबको स्वदेशी होना है, तो इनके लिए एक बार कीजिए। आभार हमें ये सहयोग देने के लिए। ये मेरी आप जगह ले सकते हो। मैं कभी कभी मुझे पूछते कि सर ऐसा क्यों करवाते हो। मैं कहा मैंने 40 साल में दिखा कि 40 साल में सब दो चीज़ आई क्लासरूम में। एक चीज़ आई सबके आंखों के आगे स्पेक्टिकल से यानी चश्मा आया, और दूसरा आया सबके हाथ में मोबाइल। चश्मा से देखने के लिए, लोगों को देखने के लिए, और मोबाइल छोड़वाने का मेरे पास एक ही काम है कि उसके पास खड़े होकर ताली बजाइए, तब तक वो अपने चश्मे से दूसरे को देखेगा, नहीं तो मोबाइल को देखेगा वो, या तो उतना मोबाइल को छोड़ेगा। तीसरी जो हमें डर लगता है, मैं ज़्यादा आपके पूरे एसोसिएशन को शुभकामनाएं। बहुत सारे 90% स्टूडेंट्स ये यूनिवर्सिटी से पास हुए, इसीलिए डर जो लगता है मैं ज़्यादातर मैं डर ही बताता हूँ। जैसे क्योंकि मैंने 40 साल में जो देखा ये शहर में कॉमर्स फैकल्टी में, क्योंकि कॉमर्स फैकल्टी में धीरे धीरे स्टूडेंट्स जो है उनके नंबर कम होते जा रहे हैं। बाकी के सर पूरी जो टीम है उसमें से कैसे उभर कर आए, वो हम सब आपकी टीम आपको मार्गदर्शित करेंगी। मगर 1000 साल में एक ही बार किसी राष्ट्र युवा होता है। हमारा राष्ट्र है 2009 में युवा होने की शुरुआत हुई।
2055 में हमारी युवा की जो जिंदगी है, यानी टोटल पॉपुलेशन बाय द एज, तो 2055 में हमारी वृद्धत्व की निशानी शुरू हो जाएगी। हाईएस्ट हम यंग रहेंगे 2047 में। सबसे ज़्यादा दिमागी ताकत होगी अपने पास, यंग इंडिया के पास, जो अभी तक हम 2009 में शुरू हुए, आज 2025 हुआ, यानी कि 16 साल में हम 16 साल जैसे यंग अभी बन चुके हैं, माइंड से, बाकी सभी जगह से। मगर आपको आपने आने वाली पीढ़ी के लिए, चाहे पर्यावरण का हो, चाहे फाइनेंस का हो, चाहे कल्चर का हो, कि चाहे अपने माता पिता के, जिस तरह से आपने आपके माता पिता को रखा, बड़ा किया, इसी तरह भारत में आने वाली नई जनरेशन को आप भी बड़ा करोगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा डर लगता है आप उनमें भारतीय संस्कृति अंदर ठीक तरह से डाल पाओगे कि नहीं, वो मुझे डर है। दूसरी चीज़ है, वो टाइम में जो बिजनेस होगा, सबको आर्थिक उपार्जन तो करना ही है, पर उनके लिए आर्थिक उपार्जन करने के लिए आप भारत राष्ट्र में ऐसी कोई सिस्टम बनाने के लिए अपना सहयोग देने के लिए तैयार है कि नहीं? किसी के लिए तैयार हो ना हो, अपने आगे वाली फैमिली के आप तैयार हो कि नहीं, उनके लिए आप जरूर सोचिए। आपके लिए तो मैंने आपके माताश्री पिताश्री ने, मैं कई बार बताता हूँ टूक में, मुझे भी मैं इसी जगह पर बैठा हूँ, हर रोज हम बताते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूट एरिया 1.5 करोड़ जन आबादी को हम कवर करते हैं, 1600 स्क्वायर किलोमीटर का कवर करते हैं, 36 MLA का कॉन्स्टिट्यूट एरिया कवर करते हैं, 9 MP का MP का कवर करते हैं। इसीलिए ज़्यादा टाइम हम नहीं रुक पाते। मगर फ्लोर पे जाने से पहले मैं एक बात ज़रूर बताऊं कि हमें और आपके माता पिता को आपकी बहुत ज़रूरत है। आप अपने माता पिता से अलग मत जाइए, अलग यानी कल्चर से मत जाइए। इसीलिए कहता हूं कि वो अगर आप आपके माता पिता का कल्चर पकड़ के रखोगे, अपने पेरेंट्स को, बिजनेस को पकड़ के रखोगे, इसी में आप इनोवेशन कीजिए। गवर्नमेंट की जॉब के बजाय आप कॉमर्स में आए हो तो कॉमर्स के अंदर भी एआई की जो चैलेंज है उसको किस तरह से आप कन्वर्ट कर पाओ, इसमें आप जरूर सोचिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप स्क्रीन टेक्नोलॉजी से दूर जाइए आप, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना खुद का सोचिए। मैं पिछले 3 महीने में एक बड़ा डिसीजन आया जो ज़्यादातर ये शहर को इफेक्ट हुआ, बाकी के राज्य में मैं सर को अभी पूछ नहीं पाया। मैं दूसरी बात पे मुझे कुछ और जानना था, इसीलिए मैं साइलेंट रहा, सर के पास जाने की कोशिश की। और पिछले 3 महीने में एक बड़ा बदलाव आया जो गूगल कंपनी ने, आज तक हम क्लोन यानी कॉपी करके अपनी ऐप्स बनाते थे, पिछले 3 महीने में यानी बहुत बड़ा बिजनेस चलता था। कम से कम मैं साउथ गुजरात की बात करता हूँ क्योंकि वो स्टूडेंट से, क्योंकि आपके हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को भी मेरी कॉलेज में पढ़ाया होगा, मगर पिछले 3 महीने में सभी क्लोन बंद हो गया। और गूगल ने कहा कि भाई जिसको करना है मुझे यूनिक चाहिए, हमें एक भी अंदर क्लोन आया तो वी आर नॉट अलाउइंग टू अपलोड योर एप्स। और इसकी वजह से पूरा जो टेक्नोलॉजी मार्केट था, जिसको हम कंप्यूटर रिलेटेड कहते थे, एआई आने के बाद ये पहला अटैक आया सोशलिज्म पे कि क्लोन बंद करो आप। दूसरा जो हमारे पास चैलेंज आया, क्लास के अंदर हमें कभी कभी सर्वे करवाते हैं या तो कुछ लिखवाने बोलते हैं कि चलो ये टॉपिक पे आप सब लिखो। आधा घंटे पे के बाद अगर हम उसका मटेरियल देखें तो 99% एआई में से आता है, तो सेम ही आता है, तो मार्क कितना देना है? 0 ही देना पड़ता है, क्योंकि सबका एआई क्लोन था। गूगल ने बंद कर दिया, हमने बंद कर दिया, तो आप कहाँ जाओगे? कहाँ जाके आपकी आर्थिक उपार्जन करोगे? और अपने माता पिता के जो आशाएं हैं, क्योंकि वो भी जब उनकी शादी हुई थी तब उनके भी अरमान थे। यहाँ आप जब घर पे गए होंगे, आज से जब से पृथ्वी पे आएंगे तब घर में आप गए होंगे तो दोनों किसी बात में बड़ी बहस करते होंगे। आप जब घर में गए होंगे तो शांत हो गए होंगे और आपको बताया होगा कि तुम्हारे लिए आगे बढ़ो
हमारी ज़िंदगी हम तरह से एडजस्ट होंगे। मगर जो आशा है वो आशा वो आपको टिकाए रखना है, आपको गलत रास्ते से नहीं जाना है, चाहे वो ड्रग्स वाली बात हो, चाहे स्क्रीन टेक्नोलॉजी के पीछे पागल होना हो, चाहे अपनी भारतीय कल्चर को छोड़ना है, ऐसी चीज़ों में मत जाइए आप तो जी जाओगे मगर आपके आने वाली पीढ़ी को आप क्या दोगे? जो मुझे मेरी दादा परदादा ने दिया, पर्यावरण से लेकर सब कुछ हमने आपको दिया 40 साल में, पर आपके आगे के 40 साल में क्या दोगे भारत राष्ट्र को? या तो पृथ्वी पे कहीं भी जाओगे तो आप तो हर हाल में बुरी आदर्शों से दूर रहिए, दूसरी दिखावा से आप दूर रहिए। और जब ट्रम्प ने कहा है, आदेश किया है, जब टैरिफ डाला है, तो इससे बड़ा मौका कोई अपने भारत राष्ट्र के पास नहीं है। वो जो दिखावा के लिए जो हम पूरे टैरिफ वाली चीज़ें परचेस करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं, इसके बजाय हमारे पास 140 करोड़ पीपल है, खुद की टेक्नोलॉजी बनाइए, क्लोन से बचिए। और पूरी टीम को फिर से यहाँ आने का मौका मिला। सबको वंदे मातरम, शुभेच्छाएं, वंदे मातरम, भारत माता की जय जय गुजरात। Thank you very much, Chawda sir. Yeah, sir has to left. So thank you very much, sir, for your kind words and regarding the future of India. सर की तरह हमारे एक सर भी हमेशा कहते थे कि इंसान का दिमाग जो है ना, वो अच्छी चीज़ों के लिए कल के लिए सोचता है और बाकी चीज़ों के लिए आज करना है। Now I would like to invite CMA Chaitanya Mohrir to come forward for his kind words. Good afternoon. Good afternoon. Respected dignitaries on the dais, CMA Neeraj Joshi, young and dynamic Vice President, equally dynamic former President CMA Ashwin Dalwadi sir, CMA Mihir Vyas, Chairman WIRC, CMA Nanti Shah, Vice Chairman WIRC, CMA Kishore Waghela, Chairman of Surat South Gujarat chapter, all the managing committee members on the dais, of the dais, and one of the youngest person in this hall, CMA Manubhai Desai. He is actually 90 years old, but he is still serving the profession. He is a true warrior for our profession. And all my members, all my students and their parents. I'll not take much of your time because you are here to, we are here to felicitate you, so it's an honor for you. Just 2-3 points I would like to discuss. For final students, those who have cleared their final, they are cost accountants. So welcome to the world of cost accountants. Now you need to know everything. In organization, whenever you join, or if you are doing practice and if you go to the client, or if you are saying in the organization, boss, this topic I have not studied, or it was an option for my syllabus, sorry. It is assumed that you need to know everything. It's next 1 or 2 years is basically your investment. So you have dedicated your time, you have invested your time to complete your CMA. But now again, next 2 to 3 years, you need to invest your time, because in organization, whenever you go, the complete financials for previous many years are available with you.
go and study what happens in the company. No one can access the financials, no one can access the costing information, but you can definitely access because you are working with the organization. So you should not say it's a 6 o'clock, my job is from 9 to 6, now my girlfriend or boyfriend is waiting outside and I need to go. Sorry, you need to dedicate 1 or 2 hours extra to study what happens in the past with your organization. The foundation and inter students, you have cleared one of the milestones. So obviously next time you need to pass the CMA examination, so you need to sacrifice, what you need to sacrifice? You need to sacrifice your parties, you need to sacrifice the next movie coming by Salman Bhai और Jolly LLB3 का जो अभी बहुत सारा videos आ रहा है, so you need to sacrifice those movies, you need to sacrifice some kind of parties, but not every party. Obviously there should be some free time or some pastime you should have, but that should be a limited time. You need to study, you need to focus on your studies. And the last point I would like to say that this world is now artificial intelligence world. How many of you are using the AI apps, maybe ChatGPT, maybe bot? How many of you are using? Just raise your hands. Almost everyone. I'll just like to say that use of technology is necessary in today's world, but you should not dependent on the technology. You should not dependent on the AI. What happens today? If I go to ChatGPT and if I give just one prompt, write a leave letter or write a simple report for using these parameters, he will give you the report or application in very beautiful English. But what will happen? Slowly, you will stop using your brain. So what is artificial intelligence? Artificial is a man-made, intelligence is a thinking power. So artificial intelligence is a man-made thinking power. So human brain has made them artificial intelligence. So you should not dependent on the artificial intelligence. You can definitely use it, but you should not be a dependent. One example I always give, when I was a child, when I was in my college, 11th or 12th, we used to have the landline phone. And in the landline phone, I used to remember at least 100 odd numbers because we used to dial those numbers. But now with the technology, I'm dependent on the technology. So only 5 or 6 numbers within my family I remember. Otherwise, all the numbers, maybe thousands of numbers are on my phone, but I don't remember that. Because what I do, I just go, I click the number, I click the name, and phone gets connected. So the dependency on technology you should avoid at this age. That is my say. Thank you. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच CMA चैतन्य मौर्य जी. यस, बिल्कुल सही बात है. अभी बाहर ही मैं एक स्टूडेंट से मिला और मैंने उनको पूछा कि आपके फादर का नंबर दीजिए, तो ही गोज टू द कॉन्टैक्ट बुक. देखिए हाउ डिपेंडेंट वी आर. एंड 2-3 दिन पहले ही मैंने सुना कि वेन एवर यू आर कॉलिंग समवन हु इज़ योर लव्ड वंस, just dial their number so that you can remember the number of your loved ones. So this is a practice we should do, and I have also started to make this practice. Now I would like to invite Vice Chairman of WRC, CMA Nantisa, to come forward for his words. Dignitaries on the dais, my dear students, their parents, the guardians, the prize donors present, my past chairman of our chapter. I understand this is not a forum where I would speak much. Everybody knows me, my thoughts. There are multiple number of places where you have heard me. First of all my final students, inter students, remember when we used to give this function in chapter or in chamber, other office and all, and we promised that we'll be moving to a newer premise. So it is all thanks to you all, your mentors, that we are able to organize this kind of event in this kind of hall. So once again, clap for yourself. And once again, we are all proud
It goes without saying that we are all about our students, all about our members. It is you all, your efforts, which has helped us improve and get motivated. Also, now that you know, during, I think, in the term of Dalwadisa only, we got PCOP, Pre-Campus Orientation Center, happening in Surat. Fine. So previously you had to go to Mumbai or Ahmedabad and all those places. All my final students, they know कैसा रहा जो last term वाले थे, अच्छा था PCOP? जाग रहे हो ना? हाँ. तो once again, pre-campus orientation, we are trying to deliver best of the soft skills to all of you. And also, I suggest my local chapter chairman and all the office bearers and managing committee, why not have a shorter, smaller campus at Surat itself? Surat is the densest taxpayer city. Surat is having so much industry. Why cannot we have the small campus in our city itself? So this is one vision I leave to my managing committee. Hopefully they'll work on the same. And once again, let me recognize our own Vice President Neeraj Joshi sir. He has always been supportive to the vision of the chapter, to the issues that have emerged. He has guided us like a mentor, and we are thankful, sir. You have taken so much pain for traveling on such a short notice. His train was also cancelled. He have flew and he has stayed awake whole night just to attend this thing on our insistence, sir. We are in very gratitude towards this thing, your presence here. With this, I would like to curtail my speech, and I understand कि जितना छोटा speech होता है, ठीक है, उतना ही अच्छा ovation मिलता है. तो for that, thank you once again. Thank you, guys. Thank you very much, Nanti Bhai. Since long we all know you, and there is lot of things to share from you, but still you have keep it very short. Now I would like to invite the chairman of WIRC, CMA, Mihir Vyas, all the way come from Vadodara to share his kind words with the students and parents. Thank you, sir. Thank you, Keval sir. Good morning everyone. Dignitary on the dais, my Vice President CMA Neeraj Bhai Joshi, my former President Ashwin Dalwadi, Nanti Bhai Sah Vice Chairman WRC, Chaitanya Mohire sir, former Chairman, Kishore Waghela, Chairman of South Gujarat Chapter, and all the management committee members, dignitary on the dais, dignitary of the dais, and my students. First of all, many congratulations for passing out these CMA examinations. This moment is very precious. I always call Surat South Gujarat chapter is a rank factory in the India. And this time also, we have got first rank in the intermediate and final from Surat. So big congratulations, Surat team and everyone. I am happy to share the result of Western India Regional Council. This time we have 15 intermediate rank holder out of 50 in the India. In the same, in the final, we have got 15 rank holder in the national levels. This time, we have contributed 358 CMA pass out in the India. This is the second highest in terms of region in the Indian level. In the intermediate, we have 967 intermediate pass out students, and in the foundation, we have 1584. This is a huge number, and I would like to big congratulate to each and every chapter of Western India Regional Council. I am also happy to share with you for this December term, we have highest number of student registration. We have crossed first time ever 10,000 student registration.
from Western India Regional Council, and 5,000 in the standalone WRC. And in the Surat, South Gujarat chapter, we have crossed 900 students, first time ever. So big congratulations, Kishore Waghela, Chairman, and Nandy Vaisa, who have always do a high effort for the student registration and student result. To support and guide student further, WRC has launched a flagship initiative, the CMA Articleship Mela. I would like to request intermediate pass out student kindly do register if you not registered till date. And also I would like to request our PCMS kindly register to help our students also. My dear students, as you move ahead, always remember knowledge, ethics, and continuous learning are the pillar of successful professional career. You everyone knows the tagline, behind every successful decision there is always CMA. As a chairman of Western India Regional Council, I urge all of you, fly hard but stay ground in value. Strive for excellence but never compromise on integrity. Be ambitious and be always humble. Thank you so much. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you very much, CMA Mihir Vyasji. We recognize the presence of CCM of the Institute of Chartered Accountants of India, CA Jai Shairaji. Thank you very much for your presence, sir. The chapter recognizes your presence. Thank you, sir. Now I would like to invite former president of the Institute, CMA Ashwin Dalwadi ji, for his kind words. Sir, please welcome. Thank you. My colleague in the council and Vice President Neeraj ji, my colleagues in the regional council, Nanti ji, Chaitanya ji, of course he is not, Chairman WIRC Mihir ji, and chapter colleagues of the dais, my guru, I would say, youngest guru, because if you look at it, no, we look at our bank balance. What is your bank balance? Okay. So whatever we have expended is not important. So if we look at it, he is the youngest, 90 plus. Am I right, sir? And perhaps I would be the second fellow. So we two, persons are youngest. Other dignitaries of the dais, Jai Bhai, particularly Gupta ji, and former chairman of Surat chapter and team Surat, and I cannot forget the persons who have come out with flying colors, their parents, their teachers, and their mentors. I am really proud to be with you as a guest in this prize distribution function. I would now, I'm thankful to the organizers for inviting me and to be a part of this wonderful session. My warm greetings to respected young achievers. Now, those who have passed have become cost accountants. And at this juncture, let me make a little bit difference between a cost accountant, a professional and non-professional fellow. Because if you look at it, if you go for MBA or other areas, you can be a graduate. You may be MCom, you may be PhD, but professional means, I'll give you the example of doctors, engineers, and we cost accountants, chartered accountants, company secretaries. What is expected from a professional?
Do you know, few years ago, I would say there was a disease that was identified by US people called anthrax. Interestingly, anthrax was removed from the earth. So it was not there in syllabi for any of the medical colleges. But when it came back by some scrupulous persons, they could find out. Doctors could find out, and it is the duty of a professional. So that is the very fine difference. Right now also, a few years back, we saw the COVID. COVID was not there. But they could say that, okay, this is a special disease. They named it and they found out the treatment. So whenever you go to your clients, to your organization where you are working, you will be expected something new. You cannot say that this is out of syllabi or this is not my domain. Nowadays, we will have to work hard every now and then. So this is very important, and now I welcome you to the professional body, and I request you to become member of the institute as soon as possible. Prize distribution is always a special moment because it is not just about the giving awards. It is about the recognizing hard work, perseverance, and dedication of those who have achieved this. Every prize you see today carries with the story of efforts because everybody has got their own efforts. For example, I can share with you, I did my BSc. So when I started for accounting, my effort levels, my expectations, my working inputs were totally different. So similarly, it was with you also. And this is combined with any professional degree, and your achievement is always combined with the efforts, discipline, and determination. Without this, you cannot have come up to this level. While winning is certainly an achievement, what matters most is the spirit of participation, the willingness to learn and courage to try again. Because many of us, including myself, we have not gone through the process of passing examination in one go. Somewhere we had some setback. No. And that is where this is the professional level exam. But our determination, our persistence, and our courage is most important. And this we have to continue in future also, wherever we are going. To all students and participants, I would like to say that success does not come with the lighter efforts. It cannot come overnight. And it comes only with the three things, particularly according to me: discipline, dedication, and determination. So this is very important. These are the three pillars, and some of you may not have received prizes because in this program, we are felicitating even those who have completed the courses also. But today, I recognize your talent, that you have achieved a particular level, and I'm sure each one of you have got some kind of talent in your own fashion, in your own way. Today's prize winners have set an example, and tomorrow maybe your turn also, those who have not received the prize. I must also take a moment to acknowledge the vital role of teachers, parents,
trainers, because right now many of the organizations, many of the teachers, I would say professors, they are not associated with education institution, they have got their own institutions. They are also putting in lot of efforts in developing us, and mentors also, who have guided, encouraged you and inspired you, and your parents also, who have supported silently and tirelessly. Their contribution is equally worthy of recognition. So you are getting the prize, but I feel that your mentors, your teachers, your guides, they are also, sharing this proud moment. Education is not only about the academic learning. Activities beyond classrooms, sports, cultural events, debates, and community services are equally important. When I talk about the community service, I request all of you that to have a good bond amongst you, you shall create at least one group, social group on mobile. So far we were telling, no, keep off the mobiles. But it is an evil which you cannot avoid. So now I am requesting you to come out with one group. ICMAI, for example, ICMAI students or ICMAI achievers 2025, Surat or something. That will help you and will bond you forever. I would like to once again congratulate all prize winners for their achievements. I also appreciate all the participants who made this event possible. And to the Surat chapter and all Surtis, I extend my best compliments for consistently bringing out rankers from Surat. It's your achievement. I appreciate that. And for that, the team Surat chapter, team professors of Surat are equally helpful, and they need our compliments. I compliment them. I would like to tell, because initially I was thinking that, okay, this is a prize distribution organization, program, so I shall congratulate you and stick to my small speech. But as a former president of the institute, let me tell you, for final students, you know, you have chosen the right profession. These are my own views, because AI is going to take over many of our tasks, accounting, auditing, whether it is cost audit, any other audit also time to come. Of course, attestation would remain there, but the level of depth would definitely change. So, but as we have my predecessors, former speakers have already said that keep up from AI, don't allow it to take over. But definitely they have said that use it. Am I right? So our institute is also taking sufficient steps, required steps towards that, and you will find very soon change in our syllabi, where AI would be part of the syllabi in many of the subjects. At ICMAI, we have now MOU with IIT Madras, IIT Chennai for learning management software, and we will be taking help of AI and this software for imparting you training, proper study also. And for intermediate and final students, I would say that
ICMI is working towards the keeping pace with the ever-changing, fast-changing, rapidly changing landscape of knowledge, and towards that, you will find lot of changes in syllabi, repeatedly, periodically, more periodically. And for final students, I would suggest that we are coming out very shortly with new kind of advanced study courses, which will also help you in updating, upskilling your knowledge very often, very fast, and repeatedly. Thank you. Thank you all. Thank you. Good afternoon, everybody. Dr. Chawda sir in his absentia, CMA Ashwin Dalwadi sir, former president of the institute, CMA Mihir Chaitanya Nanti, my colleagues in the council, CMA Manubhai Desai, our former chairman of the WRC, CA Jai Chedaji, Central Council member of the CA Institute, my entire team of Surat chapter, dear students and respected parents. Let me at the outset congratulate all the students for their success in the CMA examination. The exam that you have cleared is not a small feat, correct? It's a very difficult exam, as we all know. You have taken all the efforts. But at this occasion, I would just like to remind you of one quote by Sir Winston Churchill, when he said that now this is not the end. It is not even beginning of the end, but it is perhaps the end of the beginning, correct? So you need to remember this, that what you have achieved by completing your CMA or by completing say inter or foundation, you have not concluded your education. Even those students who have completed their CMAs, this is not end of your educational journey, correct? You are not even beginning near the end of your educational journey. It is maybe only the end of the beginning, correct? Still lot of education is pending, still lot of learning is pending, lot of experiences are to be gained, and you all shall be prepared for that, correct? For my fellow professionals who will be now soon entering this wonderful and noble profession of CMA, I welcome all of you with open arms and open heart. I request and urge all of you to take membership of the institute as early as possible, correct? Maybe around 22 years back, I was one of you sitting in an auditorium, not maybe an auditorium at those times, but sitting in a hall receiving my CMA qualification. But at those times, there never used to be such kind of a function. So this is a new addition to the institute working, and I am proud and happy that Surat chapter has taken the efforts, and this time it's a very big hall. Last time I had come, it was a smaller hall, but it is all because of your own efforts, correct? The results of the Surat chapter has been phenomenal in past so many years, and it's all credit goes to your wonderful teachers and also to you. I have been a member of the exam committee for last 6 years, and I can see the improvement in the performance of the students, I should say. And the credit all goes to you, your teachers, and I would wish all of you to keep it up and let Surat chapter's graph of success keep on increasing. And next time when I come here, this hall should not also be sufficient. We may have to take even a bigger hall, maybe a stadium even, to have a students' felicitation function for the Surat chapter per se. Correct? My only insistence to all the fellow professionals and inter and foundation pass students is you need to work very hard on your spoken English and on your presentation skills.
Correct? We all know that ours is a correspondence kind of a course. It's not a full-time course. Correct? So there is no formal education on soft skills training that happens in the CMA course. But that is of paramount importance, and that you should all keep in your mind. Correct? I learned, or I completed my basic education in my mother tongue, which is Marathi. Correct? So after that, I learned English. I learned to speak in English, stand in front of say 100, 200 people and give lecture in English. That is very, very important, because as you enter your professional life, English is the business language, correct? So if you want to grow in your career, if you want to go places, you need to be very thorough in spoken English. I am not saying that I am very, very articulate in choosing my words, but I can speak fluently, and that is what is important. And that needs practice. It is not something that cannot be achieved, correct? So I very oftenly tell my students that the simplest way to learn good English is to watch English movies without subtitles. So stop watching Hindi movies and Gujarati movies. Start watching English movies without subtitles. So that's the easiest way maybe to learn English in spoken English terms. So please do concentrate on developing your soft skills. That will go a long way in your professional career. I will not be taking much of your time. Would be just briefly talking about the initiatives that the institute is taking under the various professional avenues, so that our students, our members, they get good opportunities in their professional career. One is our recent MOU with NFSU. I am glad that Ashwin Bhai is here. He has been instrumental in getting that MOU done, and very soon we will be launching a joint program with NFSU. We all know that many of us have talked about AI, correct? So use of AI is on the rise. Use of internet banking transactions or internet or online financial transactions is on the rise, and so is the financial frauds in the online spectrum. And to cater to the need of the government in tackling this menace, there is a huge requirement of forensic auditors. And that is why we are going to focus on the area of forensic audit. So I urge all the newly entrants to this profession, as well as the students who have interest in the forensic audit domain, you can definitely go through this course. We are also trying to get ourselves engaged with SEBI under various requirements of them. New syllabus, Ashwin Bhai has already spoken about that. We will soon be coming out with new syllabus which will cover many of these aspects, having a specific focus on AI. I incidentally lead the AI committee of the institute for 2 years. Correct? Today, if I ask you that how many of you are using AI, maybe every one of you will raise your hand. Correct? But what I personally feel is using of AI, using of ChatGPT or using of Perplexity is not the end, or it's not what gives you knowledge of AI. Today, if I ask you what is the difference between Meta, ChatGPT and Perplexity, now raise your hands. This is a genuine question. What is the difference between Perplexity, ChatGPT and Meta? Raise your hands. Correct? 0 hands. That is the problem. When I say that you need to learn AI, this is what you need to learn. Typing something into ChatGPT and producing answer is not going to take you anywhere. 0 use. Correct? Because a time will come when that job also will be done by AI. Somebody will just have to speak and AI will do everything. Now what AI will do is what you need to define. And that is where your job has to be. The future is going to be challenging. I will not mince my word. This is an occasion of joy, but this is also an occasion to caution you, to let you know that there are going to be challenges. We are in the process of fundamental shift in the way every profession will be handled. There was a time in 1990s when ERP took over the world,
and lot of people lost their jobs. The jobs were not lost to the machines. The jobs were lost to the people who knew how to operate the ERP. So with AI, machines are not going to take your job. Your fellow professionals who have learnt AI are going to take your job or are going to replace you. So you please give it a very deep thought that when you say that I know AI, I know how to use AI, do you really do know that? And if you don't, please start learning, and please start learning now, because you still have 40 years of career in front of you minimum, let's say at least 30 years of career, and it is going to impact the way you perform every business. We are also focusing on specifically the training for the central services, and I would like to urge all my fellow professionals who have cleared their CMA exam now and those who are on the verge of doing it, who have cleared their inter, that also is a very, very fantastic option which we all should explore. Appearing for UPSC and specifically for ICOS. Correct? Indian Cost Accounting Services, ICOS, is a specialized branch in central government where the people who get selected in that service are deputed in central government, and you can go up to the level of secretary. Correct? So the top boss of ICOS, the chief advisor cost, he enjoys the position or the status of secretary in the institute of secretary in the central government. It's a very fantastic career. You get opportunity to actually frame the policies, to actually contribute in developing our country's economy. So I am really urging all of you that those who all are interested in public service, in joining the government service, do give it a serious thought to entering ICOS. The institute will soon come out with a dedicated training module for people who want to appear for ICOS, and it will be available for all our students and members as well. The latest challenge that we have is of the tariff war. We all know that the tariffs are creating issue, and the world is again moving towards protectionism, correct? We implemented that policy maybe 14 years back, or let's say 12 years back when Modi ji came to power. The Make in India was nothing but the root of MAGA, correct? What I believe is MAGA has been inspired by the Make in India concept. I hope all of you know what is MAGA. I need not explain. But the world slowly is shifting towards a phase when the importance of maybe globalization is fading away, and every country is realizing that they need to protect their own interest. And so shall we. But for us to fight that, we need to go back to our roots. And I sincerely believe that this is the time when costing will take an importance in the capital market, correct? Or in the world of open market. Because if you want to fight the tariff, the only option that is left with a country like India is to control the cost so that your profit margins are maintained. Correct? I come from Pune. There is a company called Bharat Forge Limited, which is one of the world's biggest exporters of forgings, correct? Or the producers of forging. The owner of Bharat Forge has very categorically said that he can sustain the tariffs only for 3 to 4 months' time. If they continue beyond that, there is going to be a challenge, and that challenge is going to be for many, many businesses. Now, for him, the only option is to reduce cost, because the customers will not bear the tariff. And that is where the importance of costing will grow in the days to come. And so we need to focus on our roots. Our degree is of cost and management accounting, correct? We are cost accountants. We are cost and management accountants. So that is our basic skill. And I believe that that will be required in the Indian economy coming forward. So please brush up your knowledge. You are already very fresh on it. But still, when you are appearing for an interview, brush up your knowledge. Be ready to face the questions on tariffs when you go for the interview. Because if you are going to any industry today, there will be some question maybe on the implications of the US tariffs and how you will handle it in any function, be it treasury, be it accounting, be it costing,
be it controlling. So I would ultimately leave you with one thought that's given by Dr. APJ Abdul Kalam, that we should not give up and we should not allow the problem to defeat us. Always remember your roots and values. They are the foundation of your success. So we may go through challenge as an economy, we may go through challenge of changing world order as an individual, but if we are strong in our roots, if we are strong in our knowledge, if we stick to the value system that we have, then we can definitely succeed in our life. I thank Surat chapter for inviting me for this program. I never miss any of the students' programs anywhere in India, because that gives me a time or opportunity to connect with the future generation. Maybe when we are offline of the stage, we can discuss about your issues that you have faced or the suggestions that you have for the institute. We are always open for that. My number is available on the institute website. Any one of you can reach me anytime that you like. We are here to support you. We are here to help you. And with this, I conclude my speech. I once again wish all of you all the best and all the success in your life. Thank you. Thank you very much, sir, for your kind words. थक गए ना? दिल की बात जुआ पे आ गई, लेकिन now is the time जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई. Yes, this is the time right now, my dear friends, to invite our rankers, और जिन लोगों का रैंक नहीं आया है उनके लिए भी ये मौका है, क्योंकि देखो जब हम किसी और के लिए तालियां बजाते हैं तो कभी कभी हमारे लिए भी वो मौका ओपन हो जाता है फ्यूचर के लिए. सो द स्टूडेंट्स हु आर ऑफ द फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड दोज हु हैव कंप्लीटेड फाइनल बट यू आर नॉट इन रैंक, बट अभी एक और रैंक बाकी है और वो रैंक है आपके लाइफ में लाने वाला रैंक. तो जब रैंकर्स को बुलाया जाए तो आपके हाथों में मोबाइल तो नहीं होना चाहिए, मेहंदी तो है ही नहीं, तो फिर क्या होना चाहिए? हाँ, सो दोनों हाथों से उनको अप्रिशिएट कीजिए. एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट द फाइनल रैंकर्स ऑफ June 25. And sir, please come forward for the felicitation of the students. Students, be ready. The first ranker of final, Hans Amresh Jain, please come forward. Fourteenth rank holder, Sarthi Chawla. Students, अभी ऐसे तालियां बजाओगे तो क्या होगा यार? हर्षित बागेरिया, प्लीज कम फॉरवर्ड. हर्ष मेहता एंड विकल्प नाथानी. हाँ, सारथी चावला आ गए.
26 जनवरी को खुशी बदलानी ने मुझे कॉल किया था 2022 में कि सर सीएमए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और देखिए आज वो रैंकर में है. I have the perfect date, 26 January 2022. She called me, should I go for CMA or not? And today she is on the stage. We want you come back. This one. And where is the next one?
स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, आपके पास कोई खास टैलेंट है तो फटाफट आगे आ जाइए, 5 मिनट आपके पास है। आपको शायरी पसंद है, आपको गाना पसंद है, आपको कुछ मिमिक्री पसंद है, कुछ बोलना पसंद है, कुछ सैर करना पसंद है, पेरेंट्स भी आगे आ सकते हैं। यू हैव अ चांस, 5 मिनट है। बोलवानो मौको छोड़वानो नहीं, बोलवानो मौको छोड़वानो नहीं। If you know that you have some talent, please come forward. ब्रिजेश भाई बराबर છે ને? हमें सिर्फ सीए में टैलेंट नहीं चाहिए, हमें और भी टैलेंट चाहिए, और आपके पास है, हमें पता है। Is there anyone? चलो यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स फाउंडेशन वाले हैं? हाथ ऊपर करो। ओके, फाइन, वेरी गुड। આ બધા પાછળ કેમ બેઠેલા છે? બહુ મજા આવે એમ? તમને ખબર છે અમે સ્કૂલમાં હતા ને ત્યારે એવું કહેતા, कितने स्टूडेंट्स को गुजराती समझ में नहीं आती है? ओके, जब हम स्कूल में थे ना तब हमारे कुछ सर बोलते थे कि जो पीछे बैठते हैं उनको एलएलबी बोला जाता है, लॉर्ड ऑफ द लास्ट बेंच। और मैं बताऊँ आपको, जो पीछे बैठते हैं ना वो हमेशा बहुत आगे जाते हैं। क्योंकि मैं भी पीछे ही बैठता था तो यहाँ तक आ गया। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, पीछे बैठकर हम बहुत सारी मस्ती कर सकते हैं, तूफान कर सकते हैं। और मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो ज़्यादा मस्तीखोर होते हैं ना वो ज़्यादा आगे निकलते हैं। तो लाइफ में थोड़ा मस्ती करना ज़रूरी है। दोज हु आर सीरियस नाउ प्लीज टर्न योर सेल्फ इनटू सम मिस्चीवियस लेवल। हाँ, क्योंकि बहुत सीरियस हो जाने पर वो टेंशन आ जाता है। तो चलो पीछे वाले, अभी मौका है आगे आने का, क्योंकि पढ़ाई के वक्त पीछे बैठना है, अभी तो लेने का मौका है, तो आगे आ जाइए। वी वॉन्ट यू टू कम फॉरवर्ड। थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ी चेयर फिलअप कर दीजिए। कम ऑन, आई विल काउंट ओनली 10, प्लीज कम फॉरवर्ड। चलो देखते हैं कौन फास्ट आगे आता है, क्योंकि पीछे बैठ के पढ़ाई खत्म हो गई, अभी आगे आ जाइए। आर यू रेडी गाइज? हेलो, गुड अर्निंग, यस, कम फॉरवर्ड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ये जो है वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, देखो आगे आ गए, और कुछ गर्ल्स भी आगे आ रही है। कम ऑन फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 15, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आगे की चेयर खाली नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे लोग हैं और इसीलिए बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग जब सीएमए के अंदर एंटर हुए थे ना, तब हमें ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला था, न तो हमें कोई ऐसी ट्रॉफी मिली थी पास होने पर। 915, 950, 975, कुछ लोग और पीछे भी बाकी है, पीछे वाले आगे आ जाइए। थैंक यू सो मच for accepting the request. बहुत अच्छा लग रहा है। 975 and the last 15 point is remaining. Thank you very much. Thank you so much.
इन सब के लिए और आपके खुद के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देखो, जो लोग तालियां नहीं बजाते हैं ना, उनको भगवान स्पेशल अवतार देता है तालियां बजाने का। सो तालियां तो बनती है, और अभी नहीं बजाएंगे तो फाइन माय डियर फ्रेंड्स। सर, shall we start? Okay. So foundation student, be ready. Are you excited? 50% ही आया। आप ट्रॉफी के लिए एक्साइटेड हो? हाँ। Yes, you want to say something? You want to sing? देखो, कम कुछ लोग लेट आते हैं, चलो देर आए दुरुस्त आए। हिम्मत जरूरी है। यस, देखो, हम सब के अंदर टैलेंट है, लेकिन हिम्मत करना बहुत जरूरी है। और कुछ नहीं हुआ तो ऐसा तो मिलेगा सीखने को कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करूंगा। चलो, व्हाट्स अ गुड नेम? कोमल पटेल वांट्स टू सिंग संग। लग जा गले। ओ माय गॉड, अब किसको गले लगाना है? सीएमए को। हाँ, वो यहाँ पर क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। ओके, प्लीज़। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन्होंने हिम्मत की है, तो इनके लिए पहले एक बार समझदार को इशारा ही काफ़ी है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून आप सबको, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई एम सो नर्वस। मैं सोच रही थी कि पहले कोई आएगा तो उसके पीछे मैं हिम्मत करके जाऊंगी सिंग करने, कि शायद कोई और आए डांस करने या सिंग करने, बट कोई नहीं आ रहा था। और सर रिजल्ट प्रोनाउंस करने वाले थे, तो मैंने हिम्मत की। एंड ओके, मैं आप सबके लिए गाना गाने जा रही हूँ, लग जा गले। आई होप आप सबको पसंद आए। आई एम सो नर्वस। लग जा गले, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको पसंद आया हो। प्लीज प्लीज, कोमल ने कमाल कर दिया।
नहीं, आपको कुछ टोकन ऑफ लव देना है तो आपको। चलो, कोई है और टैलेंटेड? आओ भाई आओ। देखो, આવવાનો મોકો છોડવાનો नहीं, બોલવાનો મોકો છોડવાનો नहीं। आज आज है, बाकी सब। हाँ, यहाँ से भी बुलाएंगे। 1 मिनट, द somebody is coming. Yes, what's a good name? अर्सिल is with us. चलो, ये कुछ हमारे साथ शायरी शेयर करने वाले हैं, तो सुनते हैं। तो क्या हो जाए? हाँ, तो आप अपने लेवल पर उनको अप्रिशिएट कीजिए प्लीज। First of all, congratulations everyone to clear CA Foundation. My name is अर्सिल सिद्धातर और मैं एक शायरी बोलने वाला हूँ। मैंने हालांकि सबसे पहले मतलब रवि सर के ऊपर भी शायरी लिखी थी, नौजर सर के ऊपर भी शायरी लिखी थी। अभी ये जो सर है और आप मतलब सबके लिए मैंने एक शायरी लिखी है। तो स्टार्ट करना चाहूँगा कि आपके ज़रिए से राह के चकनाचूर मुसाफिरों को मंजिल मिली। आपके ज़रिए से राह के चकनाचूर मुसाफिरों को मंजिल मिली, और मंजिल भी मिली इस कदर जिसे मिले प्यासे को पानी, जिसे मिले प्यासे को पानी। हम खुश नसीब है उस खुदा के जिसने हमको ये नेमत दी। काश खुदा कबूल कर ले हमारी दुआ, तो हम आप जैसे 1-2 और किरदार मांग लाए खुदा से। इसका कहने का मतलब यह है कि सर ने मतलब कितनी मेहनत से ये पूरा मतलब इवेंट है ना मैनेज की, और स्टूडेंट जो मतलब फाउंडेशन क्लियर कर चुके हैं, उनकी फैमिली में उनके रिस्पेक्ट बढ़ गई। इसके लिए सब मतलब जो आपके रिलेटिव है वो सब अब है ना ऐसा सोचेंगे कि बनो तो उसके जैसे बनो, उसके बेटे जैसे बनो या उसकी बेटी जैसे बनो। थैंक यू एवरीवन टू लिसन मी। यस, बहुत बढ़िया। कि बनो तो इनके जैसे बनो। आज कोई भी स्टेटस बाकी नहीं रहना चाहिए। Surat_ICMAI। देखो, बाकी ना रहे उसका ध्यान रहे। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अरे बोलो बोलो। चलो, और एक शायरी बोलने को कोई आया है। सर, एक रिक्वेस्ट है, अभी आपको टैलेंट शो अरेंज करना पड़ेगा हम सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। हाँ फ्रेंड्स, डू यू वांट दैट? हेलो, आपको टैलेंट शो चाहिए? तो अभी सर को बोलो कि चाहिए। ओके, सो सर की चेयरमैनशिप में ये टैलेंट शो अरेंज होना ही चाहिए। हेलो, तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स आप सबको CMA फाउंडेशन पास होने के लिए। एज अ स्टूडेंट वी ऑल नो कि एक हार्ड टाइम आता है लाइफ में कि अपने को पढ़ाई नहीं हो रही थी वगैरह नहीं हो रही थी। मैंने उस टाइम के लिए कुछ वर्ड्स लिखे थे। मुझे पता है वक्त थोड़ा मुश्किल है, बट तुम संभाल लोगी। क्यों सोचते हो मेहनत करने से पहले तुम सब खो दोगी। हाँ, रास्ते में कठिनाइयाँ बहुत है, लेकिन तुम्हारे अंदर जज्बा बहुत है। क्या हुआ कभी कभी घबरा जाती हो, उसे याद क्यों नहीं करती हो। विश्वास रखो खुद पे, सब सही हो जाएगा। बुरा वक्त है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। हाँ चलो, एक मिनट। हाँ, अभी कितने लोग हैं? दिस इज द फाइनल चांस। 1 and 2, ओनली 2 पीपल। चलो फटाफट आगे आ जाओ। 3 आना है बस। अभी ओवर। फिर टैलेंट शो के लिए कुछ बाकी रखना है, आगे आ जाओ। उसके बाद सब टैलेंट शो में भाई नाम लखवाना स्टार्ट करी दो टैलेंट शो माटे। हाँ,
બહાર નામ લખવાના ચાલુ કરાવી દઈએ આપણે આજે તરુણભાઈની પાસે ટેલેન્ટ શો માટે બુકિંગ કરવા માંડો. You can talk to sir first. क्या sir ने हाँ, what's your good name? આકાશ પન્ના. અચ્છા, વોલન્ટિયર છે આખી ઇવેન્ટની અંદર નાના મોટા દરેક અરેન્જમેન્ટમાં જેમને સપોર્ટ કર્યો છે એવા આકાશને આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈએ. Hello, good afternoon to all. हंसता रहता हूँ तुमसे मिलकर क्यों आजकल बदले बदले हैं मेरे तेवर क्यों आजकल आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ मैं बारिश की बोली समझता नहीं था हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर वो कहीं पे हो रातें कहीं पे सवेरे आवारगी ही रही साथ मेरे ठहर जा ये कहती है तेरी नजर क्या हाल हो गया है ये मेरा आँखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह तू इतना जरूरी कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ. थैंक यू. ગગન તને શોધે છે આકાશ. કોઈની પાસે એરટેલનો કનેક્ટિવિટી છે? એરટેલ કનેક્ટિવિટી અને મોબાઈલ ડેટ. हेलो गर्ल्स 1 मिनट प्लीज़. किसी के पास एयरटेल के लिए एयरटेल की कनेक्टिविटी हो तो वी वांट टू प्ले अ सॉन्ग सो प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट अस बिकॉज एयरटेल यहाँ पर जियो की कनेक्टिविटी नहीं आ रही है. एयरटेल इज़ वर्किंग वेरी वेल. यू हैव प्लीज़ गिव इट टू दैट गर्ल. ओके फाइन. यू वांट टू डांस. वेयर इज द सॉन्ग? डाउनलोड इट. ओके अभी स्टॉप करते हैं. और पीछे कौन है? उनको क्या बोलता है? बोलना है आपको कुछ? आपको गाना गाना है? सर बोलो, आपको बताओ ऐसा करूँ. 1 मिनट. यू हैव 1 मिनट. ओके प्लीज कम फॉरवर्ड. व्हाट्स अ गुड नेम? नावेद खान. प्लीज कम फॉरवर्ड.
Hello, good afternoon, everyone. क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है, कल था फकीर आज दिल शहजादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है, क्या मुझे प्यार है या कैसा खुमार है, या क्या मुझे प्यार है या कैसा खुमार है, या तुम क्यों चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में, तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में, कोई नशा है तेरी आँखों के प्यालों में, हर दिन चूरा तुम्हें मैं लाता हूँ ख्यालों में, क्या मुझे प्यार है या कैसा खुमार है, या क्या मुझे प्यार है या कैसा खुमार है, या थैंक यू. Now, thank you very much. Very good. I would like to request Bridges Mali Sahib ji to please felicitate. Please. Akash also please come forward. Yes. KC Gupta sir please. एटमॉस्फेयर थोड़ा लाइट हो गया और खाना खाने के बाद थोड़ा नींद भी बेटर हो जाती है ना. हाँ, चलो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं. दिस इज द लास्ट परफॉर्मेंस. नो 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 नो, नेक्स्ट टाइम प्लीज कीप. सायरी, चलो सायरी आग. व्हाट्स अ गुड नेम? ડેનિલ. ઓકે. ફર્સ્ટલી તો બધાને કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. પણ મારે એક અનાઉન્સમેન્ટ કરવાનું છે કે આ કોઈનું નેકલેસ અહીંયા પડી ગયું છે નીચે, તો કોઈનું ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય તો એમ તો એવું કહેવાય કે નિશાની આપીને લઈ જજો. ઓકે, તરુણભાઈને આપી દો. તરુણભાઈ વિલ ટેક કેર ઓફ ધીસ મેટર. Fine. Students, we are going to start soon. So I would like to request, please be seated. હા સર, ગુજરાતીમાં છે, સાંભળજો. હું સૂર્ય નહીં બની શકું તો શું થયું, હું ચંદ્ર જેવી શીતળતા તો આપી શકું છું, હું તારો તો નહીં બની શકું તો શું થયું, હું ઝગમગાહટ તો આપી શકું છું, હું રાત તો નહીં બની શકું તો શું થયું, હું રાત જેવી નિશ્ચલતા તો આપી શકું છું, હું ફૂલ તો નહીં થયું પણ હું સુગંધ તો ફેલાવી શકું છું, હું વાદળ તો નહીં બની શકું તો શું થયું, હું છાયા તો આપી શકું છું, હું પોતાને બદલી તો નથી શકતો તો હું પણ શું થયું, હું તારો તો બની શકું છું. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ. Thank you. Please. Dipali Ben, please felicitate. And the last but not the least, what's your good name? Manisha. Manisha Bhatti. Okay. She wants to dance. ये लास्ट परफॉर्मेंस है और उसके बाद बाकी सब टैलेंट शो के अंदर. So, ready? Okay.
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੇਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੇਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਓ ਜੱਟਾਂ ਦੇਆਂ ਕਾਕੇ ਬੱਲੀਏ ਛੱਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵਾਕੇ ਬੱਲੀਏ ਬੰਨੇ ਚੰਨੇ ਡਾਕੂ ਵੱਜਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਬੱਲੀਏ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਚ ਮਿਲਦੀ ਅਫੀਮ ਮੁੰਡਾ ਭਾਵੇਂ ਮੱਝ ਤੋਂ ਬਲੌਂਗ ਖਰੇ ਗੋਰੀ ਜੱਟ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਬੰਬੇ ਦੀ ਕਰੀਮ ਗੰਨਾ ਤੇ रखी Thank you very much. I would like to request Dipali Ben, Mahesh Balala to felicitate. And my dear friends, now the December 24 foundation pass out students come forward. કોઈકનું મંગળસૂત્ર મળી આવ્યું છે, પ્લીઝ નિશાની આપીને લઈ જજો. આકાશ પાંડે, આરતી સિરવી, આયુષી જરીવાલા, અભિષેક ગેવરિયા, અભિષેક પાલ, and yes, committee member please come forward. હા, અભિષેક बैठा, आदर्श तिवारी, अदिति पटेल, आफिफा बानो, नानवाला, अजय पाटिल. It's yours. Thank you. अक्षर गुडाडरा, अक्षित ब्रह्माने, आसित कुमार हिंसू, अमन खेतन, अमन तिवारी, अंबिका बुत्रा, अंबिका बहेटी, अमित तोरावाला, अमर कंसारा, आनंद प्रजापति, अंकित कामत, अंशिका सिंह, अंश कुमार शाह, आर्य मिश्रा, आर्यन बुबाना, आर्यन खैनी, आर्यन सतीश, आर्यन मेहता, असेर आयुष भाई, असेर यश आयुष भाई, अस्ना प्रिया जितेंद्र कुमार, अस्वा पटेल, आयुष सुमानी, आयुष मोन्टू बोलदास, आयुषी जैन, बबलू बिंद्रा सिंह, यश नीलेश भाई, भरत राठी. Please come forward. भारगीसा मुकेश भाई, भूमि हुड्डा, भूमिका कुमारी सिंह, बिचावे वैष्णवी, हार्दिक संदीप कुमार, चंदानी गौरव, चौधरी प्रवेश, दर्शन कुमार पटेल, दीप कुमारी पटेल, डैनिल कुमार सुरती, डेनिस राणा, देवांशी नायक, देवांशु जैन, धड़ुक नैन्सी, धामेलिया क्रिसा, धवल मुकेश भाई, पानसरिया, ध्रुव वालानी, ध्रुव इंगोले, ध्रुव पडारिया, ध्वनि कोठारी, दीपेन रामपरिया,
दिशा राठी, दिव्या अग्रवाल, दिव्यांशी खंडेलवाल, दिया सावड़िया, दिया पहलजानी, दिया हरकावत, डॉली धक्कड़, दृष्टि पोंखिया, एकलव्य मेहता, ईसा कानानी, फातेमा सूरतवाला। गजेरा कैनिल, गौरव पटेल, गेडिया विश्वास, घोष तुहिन एंड गोहिल प्रेम। हनोस कैसाद ड्राइवर, हार्दिक परमार, हंस लाखेसवानी, हर्ष तावरी, हर्ष उपाध्याय, हर्ष शर्मा, हर्ष राणा, हर्षी जैन, हर्षवी चेवली, हासिम यूसुफ, सालेहभाई, हस्ती मेहता, हीर जैन, हेत पटेल, हेतवी जैन, हिमांशु, हिरल चंद्रकांत सागोटिया, हिरल परमार, हितांश कापड़िया, हितांश ब्रिजेश कापड़िया एंड हितांश फैनिल भाई कापड़िया, हितेश, ईरा खत्री, ईसा मोरकेर, इसिका गिलिटवाला, जादव सुजल, जागृति पांडे, जनक सांद, जानवी पटेल।
लोढ़ा, जीनल कोठारी, जिनय संघवी, जितेंद्र कुमावत, जिया पटवा, जोशी सलोनी नरेश, काजल वर्मा, कंचन गांधी, करण गांधी, करण सिंह गिरासे, कर्तव्य निशांत जुनेजा, कार्तिक ओम प्रकाश महेश्वरी, करुणा भरतभाई, कौशल संजय पाटिल, कविराज सिंह गोहिल, कविता मुंद्रा, खैनिल मालविया, कुशल भाटिया, कुशल गुलगुलिया, खुशबू प्रजापत, खुशबू लुहाना, खुशबू सैनी, खुशी पटेल, खुशी जितेंद्र नाथ मोंडल, खुशी केतनभाई नारिया, खुशी मनीष शाह, खुशी रिपल मेहता, खुशी शैलेश प्रजापति, कोमल खेमका, क्रीना सतीश कुमार भावसार, क्रिस अल्पेश कुमार परमार, क्रिस जितेंद्र मारू, क्रिस संजय कुमार पटेल, क्रिस शर्मा, कृषि जिग्नेश परिक, कृष्णा उपाध्याय, कृष्णा दडानकर, कृष्णा त्रिवेदी, कृष्णा साहू, कृष्णा रावल, लक्ष्य खातवर, लालवानी तरुण, लाठिया हर्ष, लोकेश पाटिल and Maz Sheikh.
program is continued. Tea and coffee arrangement is made for you. तो आप जब भी जाओ टी कॉफ़ी लेकर जाइएगा. जिनको ट्रॉफ़ी मिल चुकी है उनको अगर अभी टी कॉफ़ी लेना है तो वो टी कॉफ़ी लेकर यहाँ वापस आकर बैठ सकते हैं. और माधव शर्मा, मधु मालिनी, महक सेठा, माही मंगुकिया, महिमा पाटिल, मैत्री मिस्त्री, मैत्री शाह, मलई शाह, मानस सिंघवी, मानस पुरोहित, मान्या संजय जैन, मरियम वाहना, मरियम बीबी यूसुफ रावत, मयंक वर्मा, मयूर वाघेला, मित अनिल कदम, मित राठौड़, मित जैन, नेहा भंडारी, मेहता मितवा, मिलिंद मारुति, जवाले, मिसेल दावरा, मिस्त्री श्रेय कुमार, मोदी साक्षी, मोहम्मद साद पटेल, मोहम्मद जीसान, मुस्कान अमित, मुस्कान अंसारी, मुस्कान जगदीश सिंघानिया, मुस्तफ़ा अब्बास भाई उकानी, नमन विजय त्रिवेदी, नारायण मोहाता, नील दिवेटिया, नेहा बंसीलाल सैनी, नेहा योगेंद्र मिश्रा, नेहल उमेश भाई सानकुसारे, नैन्सी बेन, परेश भाई मेवाड़ा. निखिल अग्रवाल, निराली भोला, निराली कालसरिया, निर्मला तिवारी, निशांत विनोद लाखोटिया, निशिता सैनी, नितिन राजपूत, पैजान नीरज, पलकबेन जनकभाई वाघ, पामेचा हेतल, पांडे सत्या, परी पंकज कुमार शाह, परी पेरीवाल, परी प्रदीप कुमार धामेलिया, परी उदय भाई पटेल, परमानी शिखा राजूभाई, पार्थ भट्ट, पार्थ रादरिया, पटेल कृषि, पटेल नैतिक, पिया विक्रम, प्राची नीलेश भाई, प्राची शरद कुमार गांधी, प्रथम तेजस कापड़िया, प्रीति गांधी, प्रेम कुमार अजय भाई चौधरी, प्रिंस पटेल, प्रिंस भाई रसिक भाई गडिया, प्रिया भत्तर, प्रिया पटेल, प्रिया बारेकर,
So, a small announcement. Keval Bhai, our vice chairman, has to leave due to some personal reason. So we will be felicitating him and then continue with the prize distribution. I am Dipali Lakadawala, one of the committee member. Keval Bhai, all the way from Dubai, came to Surat, pure and pure. This is the function of prize distribution. He is our vice chairman of Surat chapter. Let have a great applause for him, please. Priyanshi Suryavanshi, Priyanshi Rathi, Radhika Makwana, Rahil Adani, Rajput, Raj Babar Singh, Rajput, Tripti Kumari, Ramami Druvin, Ramani Urvashi, हाँ, चाय कॉफ़ी की व्यवस्था बगल में दोपहर में लंच हुआ था, वहाँ पे शुरू हो चुकी है. जिनको चाय कॉफ़ी पीना हो वो जाके पी सकते हैं. वी कंटिन्यू विथ राजपूत तृप्ति कुमारी, रामानी ध्रुवीन, रामानी उर्विशा, रामेश्वर गुर्जर, रौनक रंजन, रिद्धि शैलेश भाई पटेल, ऋषि अश्विन भाई नावड़िया, रियाबेन विपुल भाई गज्जर, रुद्र बरुई, रुद्र गिरीश भाई भानुशाली, सादेका बानू पटेल, साहिल लालचंद वर्मा, सानिया मलिक, सौरभ पिंचा, सौरभ कुमार सुरती, सौरभ राठी, सेजल टिकाले, शर्मा दिव्या, शर्मा सोनिका, शिव कुमार करमचंदानी, श्रेष्ठ दांड, श्रेया मिस्त्री, श्रेया
आयुष विश्वकर्मा, बेबी शाह, बरनवाल कनल कुमारी, भाग्यश्री दागा, चार्मी कलरिया, चीत संगाणी, चौधरी जसोदा, दागा रिद्धि, देवेश राठी, धैर्य करिया, ध्रुवी दहेरावाला, ध्वनि भूट, दिगिसा वैष्णव, दिव्यांशा शर्मा, दिव्यांशी वाडोदरिया, दिया चांदक, फेनिसा किकाणी, गुलशन विश्वकर्मा, गुप्ता कार्तिका, गुप्ता तनीश, हार्दिक जाजू, हार्दिक कातरिया, हार्दिसा पटोलिया, हर्ष पुंजानी, हेतवी वालंड, जाट पूजा, जयंत लाहोती, जयश्री प्रजापति, किशोर धामेलिया, जिया जिंदल, ज्योति पानीग्रही, कार्तिक परासर, खुशबू चितलांगिया, खुशी शर्मा, कोमल शर्मा, कोमल पवार, कोमल पटेल, क्रिस सुतरिया, क्रियांश कोठारी, कुलदीप सिंह चंपावत, मनीषा भाटी, मयूरी पाटिल, मिश्रा स्वाति, नैसी कोड़िया, नारोला मयूरी, नावेद खान, नेहा गधावे,